First, I think we should give a huge reaction because John Abraham returns. हम तीनों को छोड़ के चले गए कि तुम हवा को गर्म करो थोड़ा, फिर मैं आऊंगा और एंट्री लूंगा. तो बिल्कुल वही हुआ है. And I'm so happy to see John is back. I think इसका की है कि जब तुम आते हो जॉन सर वापस आते हैं प्रमोशन पे, तो I think तुम साथ में चलो भी प्रमोशन. और क्या चाहिए इससे अच्छा, और क्या होगा. तारा, this one's for you. प्लीज बताइए, प्रमोशन पे दुनिया की शामत आई हुई है. ऑफ कोर्स खूबसूरती, हैंडसमता, सब कुछ मिल रहा है इस ट्रेलर के अंदर. ऑफ कोर्स, yeah, and not to forget the content, you know. Nitin found. And now हमें बुलाई क्यों रखा है यार, आप ही लोग कर लो. Can we make some noise for Disha Patel? And here's presenting all the villains of Ek Villain Returns, ladies and gentlemen. It's time for you guys to go click, click, click. हाथ मत दियो, ऊपर नीचे रखो ना, पीछे आ जाओ. चारों के ऊपर मास्क दिख रहे हैं, सबको लग रहा है कि यार ये भी विलन हो सकते हैं, ये भी विलन हो सकती हैं और सर भी विलन हो सकते हैं. मोहित सूरी की फिल्म है ये, बहुत ही एक कंप्लीट फिल्म है. इट्स नॉट अ हू डन इट फिल्म, जस्ट अ हू डन इट फिल्म. इसमें रोमांस है, एक तरफा प्यार है, देयर इज एक्शन जैसे आपने देखा अभी. There are such beautiful women. There's so much talent in this film. So I think it's a combination of everything. It's just not a whodunit film. नीलेश, धरती पे आजा, चल. खबर जी. हाँ जी, पहली बात, पूरी एक विलन रिटर्न्स टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम DNA. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा सवाल अर्जुन दोनों से, आपसे, जॉन सर आपसे भी और अर्जुन आपसे. पहले मैं आपसे पूछूंगा अर्जुन, ट्रेलर इज ऑलरेडी देयर, सॉन्ग्स हैव बीन हिट, सो क्या जरूरत लगी एक सेकंड ट्रेलर निकालने की? बिकॉज डोंट यू थिंक दैट वी आर गिविंग अवे टू मच? But I think we need to also understand that not everybody sees everything. We should always engage every audience member. जब आप एक फिल्म प्रमोट करते हो, आप सिर्फ इस शहर में नहीं या सिर्फ इस मीडिया के लिए नहीं बनाते हो, आप आम देश की आवाम के लिए बनाते हो. कई बार किसी ने ट्रेलर ना देखा हो, गाने देखे हो. कई बार किसी ने ट्रेलर गाने देखे हो और पसंद किए हो, लेकिन दे वांट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी. आई थिंक वी शुड नॉट एवर फियर. इट इज नॉट अबाउट हैविंग एंजाइटी दैट वी आर गिविंग अवे टू मच. इमेजिन हाउ मच वी हैव, दैट वी हैव द कॉन्फिडेंस टू पुट आउट इवन मोर राइट नाउ एंड स्टिल नॉट हैव एनी आंसर्स अवेलेबल फॉर योर. So I think it shows the quality of what we have. And this is just 1 minute. The trailer was 2.5. So हमने 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर बनाई, आपको 2.5-3 मिनट ही दिखाए हैं. I don't think it's ever a bad idea to put more material out there as long as you do it well. And I think आज का जो ट्रेलर है, it kind of just sets even more interesting context to a lot of questions जो हमें मीडिया से ही पूछे जा रहे हैं. So it's always nice to be able to allow more intrigue, more questions being asked. आप सोचते हो कि आपको पता लग गया क्या हो रहा है पिक्चर में, और वो अच्छी बात है ताकि वी कैन एक्चुअली सरप्राइज यू व्हेन यू कम एंड वॉच द फिल्म. सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. जॉन सर, मेरा आपसे सवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स गुड टू सी यू. या जॉन, इट्स वेरी गुड टू सी यू. ओके, बिफोर माय एक्यूजेशंस ऑफ अरुण धवन कैन एंड नाउ. Before asking you a question, let me acknowledge the fact that, you know, I really like Attack. It was one of those, you know, smartest, slickest actioner of recent times. Thank you, I really appreciate that. Thank you. Okay, so my question to you is, sir, being an action star, how do you look upon to this trend where, you know, जब भी एक action film आती है, wherever there is this action genre that has been tried in Bollywood, it is always under the radar, it has been scrutinized heavily, but on the other hand, when similar action sequence happen in a pan-India film, they got appreciation, तालियां सीटियां बजती है. I have an example. जैसे सत्यमेव जयते 2 में there was a scene where you lifted a bike. वो that was question, but वही चीज जब जूनियर NTR ने RRR में किया, that was appreciated. What do you want to say about it? I think audience is king. You have to respect the audience for what they appreciate and what they don't. And for an actor or an entertainer, it's important for us to accept criticism, put our head down, and go on to our next project. So I'm not negative about this. You must look at everything very positively. So that's all I can say. But yeah, I think if I'm speaking about action, I think Attack has probably amongst the best, if not the best action this country has seen. So I'm just really proud of that. Thank you. उसमें दावा किया गया कि इंडिया की शायद पहली फिल्म वहाँ पे शूट हो रही है, तो वहाँ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? I have not yet gone to Iran, but I am definitely going to go to Iran because मेरे जो grandfather है, from my mom's side, he came down from Iran. So we are Iranis from my mother's side. तो मैं जाना चाहूँगा and I would like to take my mother also, क्योंकि मेरे mom के 21 cousins हैं ईरान में, so I would like to take her. Hi, this is Harshida here from Screen Graphia.
तारा एंड जो आपको पूछना था कि जब आपके दो हीरो एक्शन का पार्ट संभाल रहे थे तो आप दोनों का किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट था, आप कुछ करिए एक्शन वाइज फिल्म में, क्योंकि एक्शन बेस्ड फिल्म है इसके लिए। आई थिंक आपने शायद ट्रेलर के अंत में शायद देखा होगा कि हमारे बीच जो केमिस्ट्री है और जो ऑब्वियसली रोल्स हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते, बट देयर इज़ डेफिनेटली लॉट्स टू डू मैम. I think it's a very unique film in that way, and I think I can speak for Disha and myself, and of course she'll tell you more as well. But it's unfortunately, I think this kind of role isn't given to women very, very often, and I think we're very grateful that this is the start of something new, hopefully, in the industry where women can be a little bit badass. Why should all the men have all the fun? Disha, you want to say something about it? I think whatever Tara said is completely true. ये अच्छा है भाई. It's a Mohit Suri's film, and he ensures that girls are strong not just physically but also mentally, and as you can see, emotionally in every way possible. And yeah, you'll see much more when you see it on 29th of July. Sure, I like the chemistry in between both of you. Thank you. There's even more Between Tara and Disha, Between these two. with the girls, right? Yeah. Yeah. Yeah, I think a lot of people are enjoying the chemistry between Tara and Disha. I think John, you and me can leave now. Let them take over. अर्जुन और जॉन, आपसे पूछना चाहूँगी. अच्छा, इंटरव्यू चल रहा है. नहीं, एक सेकंड क्वेश्चन. आप दोनों ही एक्शन के लिए माहिर हैं, तो आपका जब एक्शन का कोरियोग्राफी चल रहा था तो किस तरह से आपने उसको, मतलब खुद का इनपुट था कि जो मास्टर बताते गए वही किया आपने? I think first you should follow the director's vision, जो डायरेक्टर चाहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल थ्रस्ट होना चाहिए एक्शन सीक्वेंस में. सबसे जरूरी कि आपके कैरेक्टर्स क्यों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस चांस टू से दिस. जब हम एक्शन करते हैं एज एक्टर्स, एज हीरोज, व्हेन वी आर डूइंग दिस, वी हैव अ स्टंट टीम, वी हैव ऑल दोस फाइटर्स दैट मेक अस लुक रियली गुड ऑन स्क्रीन. मैम, जेन्युइनली आई थिंक हम कोरियोग्राफी सीख लेते हैं, उनके साथ रिहर्सल करते, वी गो आउट देयर, वो अपनी जान जोखिम में भी डालते हैं. दे आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू मेक श्योर दैट वी लुक गुड. So full credit to them firstly, regardless of the film. इस फिल्म के लिए नहीं, हमेशा I just want to say एक्शन जैसी चीज़ को ज़्यादा कई बार इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, बिकॉज लगता है कि सब मस्ती हो रही है. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू बी एबल टू डू एक्शन, बिकॉज स्पेशली जब दो एक्टर एक साथ लड़ते हैं, वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ ईच अदर. गुस्सा दिखाने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड आई थिंक आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट द फर्स्ट थिंग व्हेन जॉन एब्राहम केम ऑन सेट टू डू द एक्शन सीक्वेंसेस, बिकॉज वी आर सपोज्ड टू हेट ईच अदर. But we don't, and the good part is that he knows me for a while and he eased up. When he came on set, he just took me camera, they were setting up and everything. हमने सब technicalities कर ली थी. He just stood and he said, Arjun, no matter what happens, safety is above all else. We don't need to injure each other or ourselves at the cost of giving the best shot, because we can do a retake. But if you get injured or you injure me, it'll just put a span in the works in the bigger picture. And I think that is a very respectful thing to do as an experienced actor, to come in and put me at ease that I don't need to go all out to try and prove to him that I'm acting like I'm angry, or vice versa, that he's not going to come into my space to try and dominate and make me feel insecure about it. So I think full credit to having a co-actor like him, who's very secure, who's very kind, and who's very straightforward. On the first day of an action sequence, to say that puts a young actor at ease. हाँ, मैंने एक्शन जरूर किया है, लेकिन एक दूसरे एक्टर्स के साथ भिड़ने के पहले you need that confidence that you're all on the same page. So director है, stunt team है, we listen to everybody, but at the end of the day, there is a chemistry that you also need to create with your fellow actor, and he, I think, deserves full credit for creating that with me, because मैं चुपचाप शायद कर भी देता, but the fact that he gave me that allowed me to be comfortable and confident with him on and off screen both. हमने सुना ऐसा कुछ, अगर आप विलन आप हैं, आपने ऐसा सुना ट्रेलर देखने के बाद? ऐसा सुना यार, आओ ना, 29 जुलाई को हमारी फिल्म लग रही है. अभी सिर्फ 6 ही दिन बचे. आज सैटरडे है. जब तक फिल्म लगेगी 6 दिन और इंतजार कर लो, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे. और विलन कौन है हम चारों में से, वो जानने से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटिंग ये है कि हम क्यों विलन हैं और हमारी कहानी क्या है, और हर किरदार जो हम निभा रहे हैं, चारों किरदारों के पीछे क्या कारण है कि हम जिस तरह बिहेव कर रहे हैं. उसमें रोमांस, उसमें प्यार, उसमें एक तरफा प्यार बोल लीजिए, उसमें एक पागलपन, एक जुनून बोल लीजिए, वो किस तरह हावी होता है हमारे सारे कैरेक्टर्स पे, वो आई थिंक देखना इज इक्वली एक्साइटिंग. आपको सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो जर्नी है, जिस सवाल की वजह से आप अंदर आ रहे हैं, मुझे ये लगता है जो 2 घंटे 10 मिनट में बार बार बोल रहा हूँ, 2 घंटे 10 मिनट में जो आपको वो जर्नी मिलेगी, जहाँ पे आपको, जैसे जॉन ने कहा, मोहित सूरी की फिल्म है, म्यूजिक है, रोमांस है, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड इट्स नॉट ओनली 2 men गोइंग अगेंस्ट ईच अदर, इट्स ऑल्सो द women what they're doing and how they're involved in taking the story forward. So I think क्लाइमैक्स जो आप चाहते हो कि एक आंसर मिले, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आप देखें और एंजॉय करें, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कैरेक्टर्स के साथ होता है, आई थिंक दैट्स इक्वली एक्साइटिंग एंड इक्वली एंटरटेनिंग, विच इज व्हाट वी ऑल एस्पायर टू मेक इन दिस फिल्म. सो
आई होप आपको जवाब भी मिले और आप एंटरटेन भी हो और बार बार जाके देखो। हाय, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। मेरा सवाल आप सबसे रहेगा। एक अभी जो प्रोमो दिखाएगा उसमें डायलॉग है, हीरो के लिए हीरोगिरी ज़रूरी है, बट आज के टाइम में जिस तरह से कंटेंट से लेके सिनेमा तक जो बदल रहा है, तो जॉन एंड अर्जुन, मैं आपसे जानना चाहूँगी हीरोगिरी के मायने अब क्या है? He wants to know हीरोगिरी का। I think मेरे लिए पर्सनली बोल सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को हीरो मानना चाहूँगा, आई थिंक इट इज़ द वे यू बिहेव विद पीपल, इट इज़ द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ। आप एक औरत की इज्जत किस तरह करते हो, आप बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप जब उन लोगों से मिलते हो जो आपके लिए कुछ नहीं भी कर सकते और किस तरह बर्ताव करते हो उनके साथ। आई थिंक अ ट्रू हीरो इज समबडी, एंड दैट कुड बी फॉर मेल और फीमेल। आई एम सेइंग इट इज हाउ, जिस तरह आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो वो आपकी हीरोइज्म होती है, या इसीलिए आप हीरो जाने जाते हो। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग डीड्स। हर बार वो बड़ी चीज होना जरूरी नहीं है कि हीरो होने का मतलब है कि हम कुछ कर दिखाए। रोजमर्रा की जिंदगी में इट्स सिंपली बीइंग रिस्पेक्टफुल, काइंड एंड डिसेंट। आई थिंक दैट इज लैकिंग अ लॉट समटाइम्स इन आवर वर्ल्ड टुडे, एंड आई थिंक इफ यू कैन अचीव दैट ऑन अ डेली बेसिस, वी आर ऑल हीरोज इन वन वे और अनदर। Hi, this is Harshita here from Screen Craft. जॉन, आपके लिए? I think it's a good question. He gave a very good answer. Genuine. I think he gave a very good answer. मुझे पता नहीं कि MC नितिन के अर्जुन है। That is fantastic answer. Genuinely, I'm not just saying it. He's given a fantastic answer. अभी तेहरान की शूटिंग करके